गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है भारतीय न्याय संहिता बिल 2023। टॉपिक पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पार्लियामेंट ने ये जो 3 बिल्स पास किए हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले डिस्कस करेंगे भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 के बारे में। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉलोनियल लॉज थे, 1860 से चल रहे थे लॉज कंट्री के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, जो ब्रिटिश ने बनाए थे और पुरानी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया हुआ था, ड्राफ्ट किए गए थे कॉलोनियल टाइम्स में उस समय के हिसाब से। और इतने कॉम्प्लेक्स थे कि जो है लीगल प्रैक्टिशनर्स, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और जनरल पब्लिक को इसको समझ आने में ही बहुत दिक्कत होती थी। सिंप्लीफाई करना, इसको स्ट्रीमलाइन करना लीगल फ्रेमवर्क में बहुत ज़रूरी हो गया था। और जब ये लॉ बनाए गए थे तब तो मॉडर्न साइंटिफिक प्रोग्रेस थी ही नहीं कंट्री की, और टेक्नोलॉजिकल टूल्स भी अवेलेबल नहीं थे, फॉरेंसिक साइंस भी अवेलेबल नहीं थी। तो डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी और होम अफेयर्स ने कई बार अपनी रिपोर्ट्स में कहा कि इनको जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है। तो अगस्त 2023 में गवर्नमेंट ने ये बिल्स जो है वो पार्लियामेंट में टेबल किए थे। फिर लेकिन ये बिल्स को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़ को रेफ़र कर दिया गया, जिसमें कुछ रिव्यू करने के बाद रिकमेंडेशंस दी गई। अब जो है इन बिल्स को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया और जो है अब पास कर दिया गया है। तो हम देखते हैं ये भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 है क्या, जो कि सेकेंड एडिशन है। ठीक है। अगस्त 2023 का फर्स्ट एडिशन था, ये सेकेंड एडिशन वाला है जो बिल पास हुआ है। इसमें कई तरह के चेंजेस किए गए हैं, जैसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, मॉब लिंचिंग, डेथ बाय नेग्लिजेंस, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, टेररिस्ट एक्ट से रिलेटेड। तो अगर हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट के केस में देखें तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो अब मतलब हो गया कि जब तक पर्सन जिंदा है तब तक उसको जेल में ही बिताना पड़ेगा। टेररिस्ट एक्ट जो है उसको भी जो है वो प्रॉपरली डिफाइन किया गया है। इसमें टेररिस्ट एक्ट्स के अलावा जो है, जैसे कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज या डिस्ट्रॉय करना, मॉनेटरी स्टेबिलिटी को डैमेज करना, क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करना किसी भी पब्लिक फंक्शन के अंदर, ये सब भी टेररिस्ट की डेफिनेशन में आ जाएगा, टेररिज्म की डेफिनेशन में। अगर किसी ने नोइंगली प्रॉपर्टी जो है डिराइव की है टेररिस्ट एक्ट से, उसको भी जो है वो टेररिस्ट एक्ट में ही कंसिडर किया जाएगा। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है, अगर कॉमन इंटेंशन के साथ जो है कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जा रही है तो उसको जो है वो पनिशेबल कर दिया गया है। मॉब लिंचिंग में लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ या फिर फाइन तक के प्रोविजन रखे गए हैं। और मॉब लिंचिंग कहा गया है कि मर्डर बाय ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्सनस, किसी आइडेंटिटी की वजह से किसी को आप मार रहे हो तो, ठीक है, जैसे कास्ट, लैंग्वेज या पर्सनल बिलीफ की वजह से। ऑर्गेनाइज क्राइम्स जो है उसको एक ऑफेंस बनाया गया है, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, साइबर क्राइम को। सेडिशन अब ऑफेंस नहीं है, लेकिन राजद्रोह तो ऑफेंस नहीं है, लेकिन राष्ट्रद्रोह मतलब सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया को एंडेंजर करने के लिए अगर आप कोई एक्ट करते हो तो वो जो है सेडिशन की तरह ही माना जाएगा। बिल में कम्युनिटी सर्विस को भी जो है डिफाइन किया गया है, मतलब कि कुछ ऐसे ही जो है पनिशमेंट्स होंगी जिसमें आपको जेल नहीं होगी लेकिन कम्युनिटी सर्विस देनी होगी। कोर्ट जो है आपको कह सकता है कि समझ लो आपको कोई लेबर देना है कहीं पर अपना, या फिर आपको कुछ लोगों को सर्व करना है, तो कम्युनिटी सर्विस जो है वो कोर्ट के बेसिस पर जो है वो डिसाइड की जाएगी। कुछ सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं, जैसे कि अडल्ट्री, उसको जो है इसमें से हटा दिया गया है। और जो है आईपीसी जो क्रिमिनलाइज करता था रेप, वेरिज्म, स्टॉकिंग, इंसल्टिंग मोडेस्टी ऑफ वुमेन, इन सबको जो है रिटेन तो किया गया है। और इवन अगर कोई भी अपना नाम बदलकर, अपनी आइडेंटिटी बदलकर डिसीटफुल मीन्स से फॉल्स प्रोमिस करता है शादी के या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स के, उसको भी क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023। ये टॉपिक भी पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है और उसी की ही कॉन्टिन्यूएशन है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल जो है वो सीआरपीसी को रिप्लेस करेगा, जिसमें कि अरेस्ट, प्रोसिक्यूशन और बेल डिफाइन की गई है सीआरपीसी में। ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें प्रोविजंस, तो डिटेंशन ऑफ अंडर ट्रायल्स के कंटेक्स्ट में, अगर अभी सीआरपीसी क्या कहता था कि अगर मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट जो है उसका हाफ अगर कोई सर्व कर चुका है तो उसको पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ा जा सकता है। लेकिन ये एप्लीकेबल उन प्रोविजंस में नहीं होता था जिसमें डेथ पेनल्टी मिली हुई है। ये जो बिल है इसमें जो है ये प्रोविजंस डेथ पेनल्टी के अलावा लाइफ इम्प्रिजनमेंट के केसेस में, और अगर कोई एक से ज़्यादा ऑफेंस का जो है प्रोसीडिंग्स चल रही हैं किसी पर्सन के ऊपर, तो उनको भी ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अभी तक सीआरपीसी कहता था मेडिकल एग्जामिनेशन तभी हो सकता है जब सब इंस्पेक्टर लेवल का पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट करे मेडिकल प्रैक्टिशनर को, तब जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। पर जो न्यू बिल है वो कह रहा है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है वो एग्जामिनेशन के लिए रिक्वेस्ट दे सकता है। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी कर दी गई है, जिसमें उन ऑफेंसेस के लिए जिसमें कि जो पेनल्टी है वो 7 साल या से ज़्यादा या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक है।
ठीक है। सीआरपीसी जो है मैजिस्ट्रेट को ऑर्डर देने के लिए जो है एम्पावर करता था किसी भी सिग्नेचर या हैंड राइटिंग के लिए। अब ये जो बिल है इसमें फिंगर इंप्रेशंस और वॉइस सैंपल्स भी लिए जा सकेंगे। ठीक है। टाइमलाइन फॉर प्रोसीजर्स भी डिफाइन की गई हैं। मेडिकल प्रैक्टिशनर जो रेप विक्टिम्स, जैसे एग्जांपल है ये कि मेडिकल प्रैक्टिशनर जो रेप विक्टिम्स की जो है मेडिकल रिपोर्ट बना रहे हैं, उन्हें 7 दिन के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जो है वो रिपोर्ट देनी पड़ेंगी। ठीक है। अब क्रिटिसिज्म क्या हो रहा है कि एक बहुत इसमें प्रोविज़न है कि जुडिशल कस्टडी के अंदर पुलिस कभी भी 15 दिन की पुलिस कस्टडी मांग सकती है। तो जनरली होता क्या है कि जुडिशल कस्टडी 40 से 60 दिन के बीच में होती है और मैक्सिमम 90 दिन तक जा सकती है। तो इसका मिसयूज़ कर सकती है पुलिस ऑफ कोर्स कि वो 15 दिन की पुलिस कस्टडी जो है वो शुरू में ना ही लें। जैसे ही जो जब एक्सपायर होने लगे वो 40 दिन का या 60 दिन का पीरियड जिसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, उस टाइम पर वो पुलिस कस्टडी मांग लें तो 15 दिन जो है वो एक्स्ट्रा पुलिस को जो है वो उस पर्सन की कस्टडी मिल जाएगी। और प्रॉपर्टी जो क्राइम्स प्रोसीड से निकाली गई है उसमें वो सेफ गार्ड्स नहीं डाले गए हैं जो पीएमएलए प्रोविजंस में है, पीएमएलए एक्ट में। ठीक है। यूज़ ऑफ हैंडकफ्स जो है वो ऑर्गेनाइज क्राइम के केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, लेकिन ऑफ कोर्स इसमें जो है अभी भी इसको कई तरह के ऑर्गेनाइज क्राइम्स में उसको अभी भी रिटेन किया गया है। सीआरपीसी जो है उसमें मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के रिलेटेड प्रोविजंस हैं, लेकिन इस एक्ट में भी जो है सीआरपीसी के ही वो प्रोविजंस को जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है, मतलब कंटिन्यू किया जा रहा है, जबकि ट्रायल प्रोसीजर और मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर जो है वो दोनों अलग फंक्शंस हैं। ठीक है। रिफॉर्म्स जो हैं सेंटेंस गाइडलाइंस और कोडिफाइंग राइट्स के केसेस में अक्यूज्ड के जो राइट्स ऑफ अक्यूज्ड के केसेस में वो इनकॉर्पोरेट नहीं किए गए हैं इस बिल में। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं भूमि राशि पोर्टल। गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जो है उन्होंने रिसेंटली कहा है कि 1467 प्रोजेक्ट जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, उनको भूमि राशि पोर्टल के अंदर जो है वो लाया गया है। तो भूमि राशि पोर्टल एक ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज़ का, और ये लैंड एक्विजिशन फॉर नेशनल हाईवेज़ को जो है वो एक्सपीडिट करने के लिए बनाया गया है पोर्टल। और ये पोर्टल जो है एनहेंस करता है एफिशिएंसी ऑफ लैंड एक्विजिशन प्रोसेस। और जब अगर जो है लैंड एक्विजिशन करनी है तो उसमें जो है बेनिफिट्स डायरेक्टली अकाउंट्स में ही बेनिफिशरीज के ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। ठीक है। और ये हमारे पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के साथ भी इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रैंप प्रोग्राम। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ माई एमएसएमई जो है उन्होंने 3 सब स्कीम्स लॉन्च की है रैंप प्रोग्राम के अंदर। रैंप प्रोग्राम क्या है? रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम, जो कि वर्ल्ड बैंक द्वारा असिस्टेड प्रोग्राम है। इसमें जो है एमएसएमई की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया था 2022 में। जो 3 सब स्कीम्स हैं वो एमएसएमई गिफ्ट स्कीम जो कि ग्रीन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एमएसएमईज़ को हेल्प करेगी, स्पाइस स्कीम जो कि सर्कुलर इकोनॉमी प्रोजेक्ट्स चलाने वाली एमएसएमईज़ को हेल्प करेगी, और ओडीआर स्कीम बेसिकली आपके ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है डिलेड पेमेंट्स के कंटेक्स्ट में उन स्कीम्स को जो है वो लीगल सपोर्ट जो है हेल्प करेगी ये रैंप के अंदर ये सब स्कीम। ठीक है। सिड भी ऑफ कोर्स इसमें जो है सब स्कीम्स की जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बनी है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन ने लोकसभा में बताया है कि नेशनल एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड जो है उसके मेंबर्स कैसे बन सकते हैं। तो नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड जो है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने बनाया था मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंदर, और ये एक कंप्लीट इकोसिस्टम देता है एक्सपोर्ट्स को, खासकर एग्री कमोडिटीज़ एक्सपोर्ट्स को जो है वो बढ़ाने का। इसमें 2 तरह के मेंबर्स हो सकते हैं, ऑर्डिनरी मेंबर्स और एसोसिएट मेंबर्स या नॉमिनल मेंबर्स। ऑर्डिनरी मेंबर्स कोई भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनसीडीसी जो है वो बन सकता है। ऑफ कोर्स कोई इंडिविजुअल तो इसका मेंबर नहीं बन सकता, लेकिन नॉमिनल मेंबर्स में जो है सोसाइटी जो है अगर जो है बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए ज़रूरी है तो किसी भी पर्सन को इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक्स को एज ए नॉमिनल मेंबर या एसोसिएट मेंबर बना सकती है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड। आर्ट एंड कल्चर के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली कुछ ऑथर्स हैं, तमिल ऑथर्स, तेलुगु राइटर्स, मलयालम लिटरेचर जो है लिटरेचर, उनको जो है लिटरेचर उनको जो है ये साहित्य अकेडमी अवार्ड्स मिले हैं 2023 के। तो ये अवार्ड जो है मोस्ट आउटस्टैंडिंग बुक्स ऑफ लिटरेरी मेरिट के लिए दिए जाते हैं उन लैंग्वेजेस को जो कि अकेडमी रिकॉग्नाइज करता है। ये अकेडमी 24 अवार्ड्स एनुअली देती है लिटरेरी वर्क्स में, और 22 लैंग्वेजेस जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की शेड्यूल्ड लैंग्वेज, उनके अलावा 2 लैंग्वेजेस और हैं इंग्लिश और राजस्थानी। ठीक है, जिनमें ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। साहित्य अकेडमी जो है
वो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1954 में बनाई थी। इंडिया की नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है और एज अ सोसाइटी इसको रजिस्टर किया गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। ये टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली वेदर वॉचर्स ने जो है रेयर पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स की जो है इमेजेस को कैप्चर किया है स्कॉटलैंड, नदर्न इंग्लैंड और वेस्ट मिडलैंड के ऊपर। तो इनको हम नेक्रियस क्लाउड्स भी कहते हैं या फिर मदर ऑफ पर्ल, क्योंकि जो है ये बहुत ही कोल्ड कंडीशंस में ओवर पोलर रीजन्स बनते हैं विद इन द स्ट्रेटोस्फेयर। स्मॉल आइस पार्टिकल्स से बने होते हैं और ये जनरली जनवरी में अपनी अपीयरेंस दिखाते हैं। लेकिन ये क्लाउड्स जो हैं इसकी वजह से ओजोन डिप्लीशन होती है। क्यों? क्योंकि ये एक सरफेस देते हैं केमिकल रिएक्शंस का, जिसमें क्लोरीन जो है रिएक्टिव बहुत ज़्यादा हो जाती है और ओजोन को डिस्ट्रॉय करने लगती है। और ये क्लाउड जो है नाइट्रोजन कंपाउंड्स को भी रिमूव कर देते हैं, जो कि अदरवाइज डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट ऑफ क्लोरीन के ऊपर को मॉडरेट करने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड्स। गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो ये इंडिया के बैडमिंटन स्टार्स चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड्स मिले हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स द्वारा, जो अनाउंस किए गए हैं। तो मेजर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो हैं हॉकी विजर्ड मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखे गए हैं और इनको पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड्स कहा जाता था। तो 1991-1992 से ये अवार्ड दिए जा रहे हैं हर साल मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा। और मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स ये अवार्ड्स दिए जाते हैं किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को उनकी पिछले 4 साल की परफॉर्मेंस के हिसाब से। ओके, अगर हम जनरल कंडीशंस देखें, किसी को भी अवार्ड जो है ये एक बार मिलने के बाद दोबारा नहीं मिल सकता। हर साल ये एक ही अवार्ड मिलता है, लेकिन कई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में ये जो है वो रिलैक्स की जा सकता है ये प्रोविज़न। पोस्ट ह्यूमसली भी मिल सकते हैं ये अवार्ड, और अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी को ये अवार्ड जो मिला है उसको कैंसिल भी कर सकती है। अगर समझ लो कि किसी डोपिंग जैसे किसी केस में वो पर्सन जो है वो या स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो इन्वॉल्व हो तो। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, सिक्योरिटीज़ एपेलेट ट्रिब्यूनल। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटीज़ एपेलेट ट्रिब्यूनल ने रिसेंटली सेबी के ऑर्डर को जो है वो क्वैश कर दिया है, जिसमें कि फ्यूचर रिटेल के चेयरपर्सन को और कुछ अदर प्रमोटर्स को इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए मार्केट से बैन किया गया था। तो सैट जो है एक स्टेचुटरी और ऑटोनोमस बॉडी है, सेबी एक्ट के अंदर इसको बनाया गया है टू हेयर अपील्स अगेंस्ट ऑर्डर्स जो कि सेबी या फिर जो सेबी पास करता है। अब सैट जो है वो और भी ऑर्डर्स जो जैसे IRDAI, PFRDA, सेबी के अलावा अगर ऑर्डर इनके होते हैं तो उसके केस में भी ये सैट जो है वो अपील सुनता है। ठीक है, सैट में एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं और कुछ जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर्स होते हैं। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो या तो रिटायर्ड या सिटिंग चीफ जस्टिस आई एम सॉरी सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं या कोई और जज ऑफ हाई कोर्ट जिन्होंने कम से कम 7 साल सर्विस दी हो एज अ जज ऑफ इन अ हाई कोर्ट। टेक्निकल मेंबर जो होते हैं वो इसमें सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या इक्विवेलेंट पोस्ट के। प्रेजाइडिंग ऑफिसर और जुडिशियल मेंबर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्टेशन करके। ठीक है, अब जो इनके ऑर्डर्स के खिलाफ अपील होती है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जा सकती है। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Bharatiya Nyaya Sanhita Bill 2023. This topic is important for your polity section. So as we know that yesterday the parliament has passed the 3 bills which aim to overhaul the country's criminal justice system by replacing the colonial era laws. So these 3 bills are Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023, Bharatiya Sakshya Bill 2023. Okay, so why second is mentioned here? Because the first bills were introduced in August 2023, but after parliamentary standing committees reviewing and recommendation of and certain recommendations, these new bills have been introduced and recently and they have been passed now. So what was the need of these new bills? So we know that for the last many years, but especially between 1860 to 2023, the country's criminal justice system was functioning as per the laws made by the British, and they were drafted during colonial times and they contained archaic language. So these laws have become very they had become very complex over time. So it led to confusion among legal practitioners, law enforcement agencies, and the general public. And
Simplifying and streamlining the legal framework will ensure transparency and understanding. So this Indian Evidence Act was enacted much before the advent of modern forensic science and technological tools, and various reports, including the department-related Parliamentary Standing Committee on Home Affairs reports, in several reports recommended that there is a need for a comprehensive review of the criminal justice system of our country. So, as per the recommendations, the government in 2023 August introduced these three bills to the parliament, but these bills were referred to the Parliamentary Standing Committee on Home Affairs for review and recommendations, and now these bills have been reintroduced. That's why the term second have been mentioned in every in the at the end of every bill. Okay, so these three bills were withdrawn from Parliament on December 12th, but revised versions of these bills were introduced and they were have been passed now. So what is this Bharatiya Nyaya Sanhita bill, second bill? What is this bill? So this basically deals with the IPC, and certain changes have been made for offences like criminal conspiracy, mob lynching, death by negligence, organized crimes, and terrorist acts. So under this BNS, life imprisonment has been defined as imprisonment for life, which means that the person will remain in the prison for as long as he is living in his natural life. So terrorist acts have also been defined clearly now, apart from, of course, the usual words or usual definition of acts which destabilize the political, economic, and social structures of our country. Certain other innovative terrorist acts have also been introduced, like the damage to destroy damage or destroy destruction of critical infrastructure, damage to the military stability of India, use of criminal force and against any public functionary, and merely possession of a property derived from a terrorist act which was made punishable earlier has been removed now. Now only it would be punishable if the property has been derived knowingly. Okay, so criminal conspiracy has also been made punishable if it is committed with the common intention. So minimum punishment for mob lynching has also been introduced. Murder by a group of five or more persons on grounds of certain identity markers like caste, language, or personal belief will now be an offence with penalty of life imprisonment or death, or with a fine. Organized crimes have also been added as an offense, for example, kidnapping, extortion, and cybercrime. So, sedition is no longer an offense, but if new offense has been introduced for acts which endanger the sovereignty, unity, and integrity of India. The bill has also defined community service more explicitly. The bill has defined the community service as any court ordered work which benefits the community, serving as a form of punishment for offenders. The Supreme Court has also the bill has also omitted certain decisions of the Supreme Court. For example, the adultery has been omitted now as an offense, and murder or attempt to murder by a life convict, life in that case, life imprisonment has been issued as one of the as an addition to the death penalty. So, with respect to offences against women, it has also criminalized sexual intercourse with a woman by deceitful means or making false promises. Okay. So the next topic is Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita Bill 2023. So this is an addition to the above mentioned bills. So that's why this topic is again important for your polity section. So Parliament has passed these three bills. Now we are going to discuss what is this Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023. Basically, it's the replacement of CRPC. CRPC provides for the procedure for arrest, prosecution, and bail. And if we look at the key highlights of this bill, the as per the CRPC, if an accused has spent half of the maximum period of imprisonment in a detention, he must be released rather on personal bond. But this would not be applicable in offences which are punishable by death. So this bill also adds more exception to this provision. If offences are punishable with life imprisonment, or persons against whom proceedings are pending in more than one offence, in that case also this provision of releasing on personal bond would not be applicable. Earlier, as per CRPC, medical examination can only be requested by a sub-inspector level police officer or above, but now this bill says that any police officer can request such an examination.
This bill also mandates forensic investigation for offences punishable with at least 7 years of imprisonment. Earlier, CRPC empowered the magistrate to order any person to provide specimens, signatures, or handwriting, but this bill expands this to include finger impressions and voice samples also. Okay, so this bill also provides prescribes timelines for various procedures. For example, medical practitioners who are examining rape victims must submit their reports to the investigating officer within 7 days. But there are certain criticisms of this bill also. For example, in this bill, uh, 15 days of police custody can be authorized in parts during the initial or later period of judicial custody. So, of course, this would lead to denial of bail for the entire period, because if the police because the police may deliberately not exhaust this police custody period. So this would mean that the entire maximum 90-day period of judicial custody would be utilized and the accused would have to suffer in the custody. Okay, so the power to attach proceeds from crime do not have any safeguards which are otherwise provided in PMLA. Use of handcuffs has been permitted in range of cases, including in organized crimes, which is of course contradicting Supreme Court guidelines. This bill also retains provisions of CRPC related to maintenance of public order, whereas trial procedure and maintenance of public orders are distinct functions. This bill does not codify rights of the accused also. Okay, despite the recommendations of several high level committees. So the next topic is Bhumi Rashi portal. This topic is important for your uh, governance and your economy section. Union Minister of Road Transport has said that 1,467 projects of National Highways Authority of India have been brought under the Bhumi Rashi portal. So this is a e-governance initiative of Ministry of Road Transport and Highways. The portal aims to expedite the process of land acquisition for national highways. The portal enhances the efficiency of the land acquisition process, and it also results in the e-transfer of benefits directly to the accounts of the beneficiaries. So this portal has also been integrated with the public financial management system. So the next topic is RAMP program. This topic is important for your governance and your economy section. Union Minister for MSME has launched 3 sub-schemes under the aegis of RAMP program. So RAMP is basically raising and accelerating MSME performance program, which is assisted by the World Bank, and the aim is to improve the performance of MSMEs in India. It was launched in 2023-22, and National MSME Council is an administrative functional body of the RAMP program. So what are these sub schemes which have been launched now? First scheme relates to the MSMEs who are working in the adoption of green technology. So the second scheme aims to support the circular economy projects in the MSME sector. Third one pertains to the online dispute resolution for delayed payments, and SIDBI of course will be the implementing agency of these sub schemes. So the next topic is National Cooperative Exports Limited. This topic is important for your economy section. So Union Minister of Cooperation has informed the Lok Sabha about the National Cooperative Exports Limited, which was set up by the Ministry of Cooperation under the Multi-State Cooperative Societies Act of 2002. And the aim is to provide a complete ecosystem for the promotion of exports, mainly of agricultural commodities. And NCEL has two kinds of members, or provision for two kinds of members. First is the ordinary members. Any multi-state cooperative society, NCDC, or can become the ordinary members of this NCEL, and no individual of course will be eligible to become an ordinary member of NCEL. And there is a provision for nominal or associate members also. The society may, in the interest of promotion of its business, admit any person, including any cooperative banks, as a nominal member or associate member. Okay, so the next topic is Sahitya Academy Award. This topic is important for your art and culture section. So recently, Tamil author, Telugu writer, and Malayalam literature have become um, the people who have been awarded this Sahitya Academy Awards for the year 2023. So Sahitya Academy Award is awarded for the most outstanding books of literary merit published in any of the major Indian languages recognized by Academy. So 24 awards are given to literary works in the languages which have been recognized by the Academy. So apart from the 22 scheduled languages, English and Rajasthani are the other languages in which the awards are given. So what is Sahitya Academy? It was formally inaugurated by Government of India in 1954, and it is India's National Academy of Letters. It functions as an autonomous organization, and it was registered as a society under the Societies Registration Act of 1860.
So the next topic is polar stratospheric clouds. This topic is important for your environment topic. So recently, weather watchers have captured the images of rare polar stratospheric clouds over Scotland, Northern England, and the West Midland. So these clouds are also called nacreous clouds or mother of pearl. They are formed in very cold conditions over polar regions within the stratosphere, and they are made of smaller ice particles. They generally make their first appearance in January, but the impact of these clouds is bad. Why? Because they are harbingers of ozone depletion. How? They provide a surface for chemical reactions where chlorine gets converted into reactive ozone destroying forms, and they also remove nitrogen compounds which would otherwise moderate the destructive impact of chlorine on the ozone layer. So the next topic is Major Dhyan Chand Khel Ratna Awards. This topic is important for your governance section. So India's badminton stars Chirag Shetty and Satvik Ranki Reddy have been awarded the Major Dhyan Chand Khel Ratna Awards, announced by the Ministry of Youth Affairs and Sports recently. So these awards are named after the hockey wizard Major Dhyan Chand, and these awards are conferred annually by the Ministry of Youth Affairs and Sports since 1991 to 1992 period, and they are given for the most outstanding performance in the field of sports and games by a sports person over the period of last 4 years. And there are general conditions also, like no award will be made for a second time to the same person. Only one award every year will be made, but of course this condition can be relaxed in certain circumstances. The award is given posthumously on such certain occasions, and the government of India can also cancel and annul the award for any recipient for any specific reasons, especially during including doping. So the next topic is Securities Appellate Tribunal. This topic is important for your economy section. So SAT has recently quashed a SEBI order which banned future retail chairperson and some other promoters from the securities market for 1 year in an insider trading case. So SAT is a statutory and autonomous body which was formed under SEBI Act of 1992 to appear to hear appeals against orders passed by SEBI or by an adjudicating officer of the SEBI. So the same SAT also hears appeals against the following orders, which are issued by IRDAA, PFRDA, and even SEBI, of course. So SAT consists of a presiding officer and a number of judicial and technical members. So presiding officer should either be a retired or sitting judge of the Supreme Court, Chief Justice of the High Court, Judge of the High Court. Judicial member should be judge of the High Court for at least 5 years of service. So these are the certain criterias. In case of technical members, secretary or an additional secretary in the ministry or department of the central government, or an equivalent post in the should hold an equivalent post in the central government or a state government. Okay, so these presiding officers and judicial members are appointed by the central government in consultation with the Chief Justice of India or its nominee. Okay, so appeals against the orders of SAT can be made to the Supreme Court, and these appeals can only be made on any question of law. Okay. So these were our topics for today. Please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.